Hello guys, hello students, welcome to my channel Maths Concept with Itishree। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, पॉलिनोमियल से क्या क्या क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में हम सॉल्व करेंगे। ओके तो सपोज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का। ax² plus bx plus c, okay, is a polynomial. Let alpha and beta are two zeros. Then in the previous video we have learned that the sum of 0 is equals to coefficient of x, that is minus of b, and coefficient of x square is minus of b by a, and the product of 0 is constant and coefficient of the x square, that is c by a। ओके ओके, ये मुझे कुछ क्वेश्चन मिला है, ये CBSE 2020 में आया था। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² plus 3x minus 5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड्स करना है। ओके, और रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ओके, वेरीफाई करना है वेदर ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। ओके ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, द गिवन पॉलिनोमियल इज 2x² plus 3x माइनस ऑफ 5। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिख देंगे। ओके, ए वैल्यू इज़ 2, बी का वैल्यू है 3 एंड सी इज़ माइनस ऑफ 5। ओके, तो ज़ीरो निकालने के लिए फॉर्मूला है तुम्हारा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। just substitute the value of a, b and c. Okay, minus 3 minus of b square is 3 square is 9 minus of 4 into 2 into minus of 5 square root by 2a into 2. Okay, so you will get minus of, ओके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x1 वैल्यू आएगा 1 एंड x2 वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 2.5। ओके, सिंपली यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ चेक वेरिफिकेशन। ओके, सम ऑफ ज़ीरो दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 plus minus of 2.5 which is equals to minus of 1.5. check whether b by minus of b by you are getting 1.5 or not, but the sum of 0 is minus of b by a. What is the b value here? 3 by 2 which is equals to minus of 1.5. so first case is verified. Okay, then the second one is product of the 0 is x1 into x2 equals to 1 into minus of 2.5. you will get minus of 2.5. okay, then but product of the zeros is it's c by a. c by a is, what is the c value here? Minus of 5 by a is 2, so minus of 2.5 you are getting correct. so this is verified. okay okay, comes to the next question. CBSE 2019 में आया था ये। if alpha and beta are zeros of 6x² minus 7x minus 3 find alpha plus beta and alpha beta. okay, सोल्यूशन हम इजी सोल्यूशन करते हैं। ओके, पॉलिनोमियल दिया है 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3। ओके,
तो ज़ीरो इज़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. So alpha plus beta is minus of b by a. What is the value of b here? 7. Okay, so minus of 7 by a value is 6. That is 7 by 6. And product of the 0 is c by a. C value here is minus of 3 by a is 6, which is minus of 1 by 2. Got it? Come to question number 3. Find a quadratic polynomial whose zeros are 2 and minus 3. Okay, ये ज़ीरोज़ दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो कैसे करते हैं? लेट्स से पॉलिनोमियल क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. सो एक्स माइनस ऑफ 3, एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू x plus 3 into some constant, let's say k. This is how if the zeros are given, then the polynomial is a product of the x minus of 0, let's say 1 alpha, and x minus of beta. Okay, from here I just calculated this value. Okay, so let the polynomial is, the constant is k. Okay, so zeros is given x minus of 2 into x plus 3, minus of minus 3 is plus 3 is 0. So this will be k into x square minus of 2x plus 3x minus of 6. This is equals to k into x square plus x minus of 6. Okay, let's say for simplicity k is equals to 1. So the given polynomial will be x square plus x minus of 6. So the polynomial is p of x is this much. Okay. Okay, next come to the fourth question. For what value of k is x equals to minus 1 is 0 of the polynomial kx square plus 2x plus 1. Okay, इस ये क्वेश्चन में क्या बोला है? तो की का ऐसे कांस्टेंट कौन सा वैल्यू होगा जिसमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस 1 दिया हुआ है? तो हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल में जस्ट यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एज माइनस 1. ओके, सो सब्सटीट्यूटेड k इंटू minus of 1 square plus 2x plus 1, that is, which is equals to 0 because, okay, so it will be k plus, this is 2 into 1. Okay, so k plus 2 plus 1 is equals to 0. That means we did a little mistake here. This is value is minus of 1. Let's do it once again. Okay, so the polynomial is kx square plus 2x plus 1. Okay, just replace, which is equals to 0 because 0 of the polynomial is given as minus of 1. So just replace the value of x. So k into minus of 1 square plus 2 into minus of 1 plus 1 equals to 0. Then so k minus of 2 plus 1 is equals to 0. That implies k value is plus 1. Okay, so the value of k will be 1. Got it? Okay, then come to question number 5. ये आया था CBSE 2023 में. ओके, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ फॉर द पॉलिनोमियल p of x. ओके, ओके, अभी देखते हैं. तो सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरो इज
1 plus 3 is 4, which is nothing but minus of 4 minus b by a is 4. Okay, and product alpha into beta is 1 into 3, which is 3 is this is c is 3 by 1, c by a, which is 3. Verified. This one is verified, this one is also verified. Okay, here the zeros of the polynomial are given. The zeros are 1 and 3. This you can calculate. Okay, then you can verify this one. Okay, सो ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चंस CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर एग्ज़ाम में जैसे कि उसका स्टेप बाय स्टेप लिखो तो भी मार्क आता है उसका, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन होता है एग्ज़ाम पेपर में, और फॉर्मूला सब याद रखना है, और साइन गलती तो हो ही जाता है सबसे। ओके, सो दीज आर सम फ्यू क्वेश्चंस, होप इट हेल्प्स यू। अगर कुछ डाउट या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको लगा कि यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।